नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के 27वें एपिसोड में, हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है आपका विश्वास हमारा प्रयास। आज हम हमेशा की तरह एक और स्कूल ऑफ स्टडी के से संबंधित जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपका तारुफ कराऊं, मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्यक्रम के दौरान जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट्स हों, आप कुछ भी क्लैरिफिकेशन लेना चाहें, तो आपके स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और कार्यक्रम के दौरान ही हमारे एक्सपर्ट्स आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन से संबंधित जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल में हैं प्रोफेसर सीबी शर्मा और डॉक्टर भारत भूषण। प्रोफेसर सीबी शर्मा हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से वो उच्च शिक्षा में अपना योगदान देते आए हैं और इग्नू में भी उनका काफ़ी लंबा योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरपर्सन भी रहे हैं। उन्होंने ओपन एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को काफ़ी हद तक एनरिच किया है अपने एक्सपीरियंस से और वास्ट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस है उनका। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में भी आप रहे, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और अब पिछले कई सालों से, कई दशकों से मैं कहूँगी, इग्नू आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहा है। इग्नू के स्टूडेंट्स आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे शायद भावी विद्यार्थी जो होंगे उनको हम थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोफेसर शर्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी जो मेरे सहयोगी हैं और हम सब साथ काम करते हैं। आपका सबसे पहले तो आभार कि आपने आज ये मौका दिया है कि हम अपने विद्यार्थियों से और भावी विद्यार्थियों से चर्चा कर सकें। जैसा भावना जी ने बताया, हम आज शिक्षा से जुड़े जो कार्यक्रम है, शिक्षा विद्यापीठ, उसकी चर्चा करेंगे और उनकी बात करेंगे कि आप किन कार्यक्रमों में नामांकन करा सकते हैं, उसका क्या लाभ होगा, विद्यापीठ करती क्या है, किन क्षेत्रों में काम करती है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप जैसे शुरू करती हैं हर कार्यक्रम को, तो बताइए कि कहाँ से शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले उन विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए शुरू इससे करेंगे कि जिन्हें नहीं पता हमारी शिक्षा विद्यापीठ कब शुरू हुई, किस मैंडेट, किस मिशन के साथ शुरू हुई और हम वहां से लेके आज यहाँ तक का जो सफर तय कर चुके हैं उसमें क्या माइलस्टोन्स रहे, उनको हम पहले वो बैकग्राउंड देंगे और आगे बढ़ेंगे। सर जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करें अपने माननीय कुलपति जी का, प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का, कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी इच्छा के कारण हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और आज किन्हीं कारणों से माननीय कुलपति जी उपस्थित नहीं है, लेकिन आमतौर पर हमारे साथ वो रहते हैं, तो उनका भी आभार और विश्वविद्यालय का आभार। और जैसा भावना जी ने कहा, हम चर्चा यहाँ से शुरू करेंगे कि शिक्षा विद्यापीठ के कार्यक्रम क्या हैं, वो क्या करती है और क्यों। भावना जी, अगर सही तौर पर बताएं तो शिक्षा विद्यापीठ पहला विद्यापीठ है जो इग्नू में बना था जी। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि हम उच्च शिक्षा में, चूंकि शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं होता है और शिक्षक जो उच्च शिक्षा में पढ़ाते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि उनके दायित्व क्या हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं। वो तो विषय पढ़ के आते हैं और विद्यालय शिक्षा से अलग इतर ये सीधा क्लास में जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विद्यालय शिक्षा में तो उनकी ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है बच्चे कौन होंगे, क्या होंगे, उनको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। उच्च शिक्षा में ये नहीं होता है। लेकिन जैसा कि भारत जी को ज़्यादा पता है कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये साफ साफ कहा गया था
कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और उसी समय में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो शिक्षा नीति में भी यह कहा गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस काम को उठाए और बड़े पैमाने पर जो उच्च शिक्षा में शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण करे। तो जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक तो उच्च शिक्षा में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से शुरू किए थे, बाद में उसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन कहा गया। तो इस पर 1 मिनट हम लोग और चर्चा कर लेंगे। देखिए, उच्च शिक्षा में बाद में 86 के शिक्षा नीति के कारण ही एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना की गई थी। शिक्षक वहां आएंगे, अपने विषय में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर सीखेंगे, जानेंगे, और एंड्रोगॉजी भी सीखेंगे कि बड़ों को कैसे पढ़ाया जाए, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो इन दोनों चीजों के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना की गई थी, और उसके समरूप ये कहा गया था कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी शिक्षकों का प्रशिक्षण करेगी। और हमारे डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम बाद में कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन का नाम दिया गया, उसको इक्विवेलेंट टू 2 programs of academic staff college, रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन के बराबर माना गया था। जो दूसरा बड़ा क्षेत्र वो अभी भी मान्य है और अभी भी हम उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो एक तो जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले आज उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन जरूर करें। इससे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। एक तो फिलॉसफी ऑफ हायर एजुकेशन क्या है, जिसकी चर्चा भी हम किए कि विद्यालय शिक्षा में हम रिगरस ट्रेनिंग करते हैं व्यक्ति का, तब वो जाकर के टीचर बनते हैं और क्लास में उनको हम घुसने देते हैं। क्या कारण है कि उच्च शिक्षा में नहीं है? सीधा शिक्षक मास्टर्स करता है या पीएचडी करता है और वो शिक्षक बन के इस क्लास में चला जाता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। तो क्या वो जो पेडागोजी है, जो साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग है, वो हायर एजुकेशन में नहीं जरूरी है? और वही जो गैप था वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। पुनः मैं दोहराऊंगा कि जो शिक्षक, all those teachers who are watching today and they are in higher education, do definitely look at the program structure of postgraduate diploma in higher education and take admission. It is very, very good program which will give you a wide understanding of higher education, philosophy of education, why higher education, research in higher education, global scenario in higher education, how do different universities handle higher education, what is the purpose, why were universities created, and how do they take up various areas of education. So first and foremost, I would say that those who are watching this program today are in higher education must take admission in postgraduate diploma in higher education. The second major assignment of Ignou was, when it was established, to prepare personnel for distance education. Let me also give a small background, Bharatji, about distance education. When Ignou was established, there was already a university. You know very well about it, Andhra Pradesh Open University. And Professor G. Ram Reddy, who was instrumental in establishing the Andhra Pradesh Open University, was also appointed the officer on a special duty and later became the Vice Chancellor. Professor Reddy had very clear understanding of it, that it's completely different system of education, unlike classroom teaching. So we need to prepare personnel for handling higher education, various areas, because it's complete new pedagogy. So another diploma that was started was diploma in distance education, so that those who intend to work for higher distance education can undergo this program and be prepared to take up the charge of distance education. And also understand the nitty-gritty of the distance education system, how they will be, trained, and what is the importance of distance education in expanding the aura of education in the country. Exactly. So those who would be working in it and those who would be handling the system at the grassroots level. So if I can explain slightly more, those who would be writing material, so they had to be trained to understand what is self-instruction material. Those who would be designing and developing audio-video material, they had to be trained in media in education, because it was not exactly the media in entertainment. So
That was another area. And as you said, that those who would be handling the students at the study center level, they also had to be trained who is a distance learner. And is he or she different to one who is sitting in a classroom? So another diploma that was started initially was Diploma in Distance Education, which became Postgraduate Diploma in Distance Education, then Master of Art in Distance Education. Now we have a number of programs and so much material has been designed and developed. Again, I will say, those who are working at the study centers, either of Ignou or of any other open university, and including open schools. Open schools have expanded so much. In fact, the National Institute of Open Schooling is as large as Indira Gandhi National Open University. Similarly, it has about 3 million students on its rolls and expanded to many other countries like Ignou. So, those who work or intend to work in the Indira Gandhi National Open University or at the school open schooling level, which has also branches in various states, they should do this diploma in distance education, and those who want to excel in it should do a Master of Art in Distance Education. So I hope we have answered your question, rather a long answer, that it was started in 1987 and these were the first programs. It was established to prepare personnel for distance education. Thank you so much, sir. This is a very comprehensive overview and I am sure this has set the tone, just the right tone for the program today. So since we have already given a brief understanding of the postgraduate diploma in higher education and postgraduate diploma in distance education, now the next thing that would come to some of our viewers' minds would be that there is, of course, a very big chunk of students who always express their interest in the B.Ed program. And then there are other programs offered by the school and the research degree program. And also how we bifurcate the programs that are offered by Ignou in terms of the ODL programs and online programs, right? Online is a new factor that has emerged on the scene for Ignou, and I'm sure the students are also looking forward to obtaining knowledge about that. So let us try and cover this ground too. Look, education as a discipline has two major areas. One, education as a discipline, and education as a profession. As a discipline, we design and develop courses which develop understanding in education, like what I would say, higher education as a system. Research as an integral part of higher education. The whole higher education as a system which emerges from economics of education, sociology of education, philosophy of education, politics of education. So it pulls its corpus from various disciplines and becomes a discipline in its own right. Right. Sometimes people also say that education is not exactly a discipline, it is an area study. Because it pulls its content corpus from various other areas like economics of education. Those who are working in the area of economics of education, how much money should be put in, how much return can one get by spending in education and things like that, is purely economics or not education, but it also requires understanding of education. So we bifurcate the whole discipline into two areas. One is design, development, understanding, research in disciplinary areas. The other major area of education is preparing personnel. Right. What you just now said, कि जो हम B.Ed कराते हैं, M.Ed कराते हैं, इनके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम ऐसे व्यक्ति तैयार करते हैं जो कक्ष में जाकर के बच्चों को पढ़ाएं या बड़ों को पढ़ाएं. तो वो प्रोफेशनल काम है हमारा एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन का. हमारे 3-4 प्रोग्राम है, जैसे एक तो B.Ed प्रोग्राम है और एक मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन था, मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम था जिसको M.Ed कहते हैं. कुछ कारणों से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसको 2014-15 में बंद कर दिया, ये कह के कि पहली डिग्री हम डिस्टेंस से नहीं करने देंगे और
हायर एजुकेशन मास्टर्स हम डिस्टेंस से नहीं करने देंगे। ये सोच है देश की और ये एमसीटी की सोच है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरे एकेडमिक के हिसाब से ये गलत डिसीजन है। दुनिया भर में हम पर्सनल तैयार करते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। वैसे लोग जो हम कहते हैं कि वैसे लोग जो पहला मौका चूक गए उनको दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, अगर वो दूरस्थ के माध्यम से मास्टर्स करना चाहें तो क्यों नहीं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ये विचार नहीं है। तो वो प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन बीएड प्रोग्राम इग्नू करा रही है। पुनः दूरस्थ शिक्षा का देखिए भावना जी, एक खूबी है कि हम एक बड़ी संख्या को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। एक समय में दूरस्थ शिक्षा भारत के 25% विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे निर्णय हुए उसके कारण ये संख्या घटती गई है कि आपने संख्या कम कर दिया या आपने ये कर दिया कि आप हमसे अनुमति, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहती है कि हम वही कार्यक्रम चलाएंगे जो उसकी पर अनुमति वो दे, और उनकी अनुमति अब किन कारणों से कैसे आती है इस पर मैं पुनः टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन शिक्षाविद होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इग्नू की संख्या कम की जाए। इग्नू का काम ही है, हम देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहते हैं कि केवल 26% रेलेवेंट एज ग्रुप के बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, और हम एस्पायर करते हैं कि 2030 तक हम इसको 50% ले जाएंगे। हम इतने कक्ष बना पाएंगे क्या, इतने विश्वविद्यालय बना पाएंगे क्या? तो दूरस्थ शिक्षा ही वो माध्यम बचता है। तो इसलिए नहीं कि अब राष्ट्र को जरूरत है तो हम दूरस्थ शिक्षा को कहेंगे आप बढ़ा लीजिए। अभी आप ऑनलाइन की भी बात कर रही हैं, ये विषय शिक्षाविदों का है, इसीलिए मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूं। और चूंकि आप समझना चाहती हैं कि शिक्षा एक विषय क्या है, इन्हीं विषयों की चर्चा करने का विषय शिक्षा है कि भाई 26 से 50 कैसे पहुंचेगा। आपने सर बहुत अच्छी बात की। अभी जो मास एजुकेशन है उसमें हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की और डिस्टेंस एजुकेशन की एक्सपर्टीज है। और जहाँ तक हम अपने भारत देश की बात करें, भारत देश बहुत बड़ा देश है, और जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है, डिस्टेंस एजुकेशन की जो आइडिया था वो कंसीव ही इसलिए हुआ था कि डिमांड है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी लिमिटेशन को देखते हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके बिल्कुल हमने बिना इस सिंगल पाई खर्च किए हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने अपने दायरे को बढ़ाया। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का और स्कूल ऑफ एजुकेशन का जो रोल रहा है इन रीचिंग टू द अनरीच्ड एज फार एज ट्रेनिंग टू द टीचर्स इज कंसर्न इन दिस कंट्री एंड द फ्रेश स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं हमेशा कहता हूं सर, जब हम इंटेक की बात करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में जो इंटेक, अभी आपने कहा कि जो इंटेक है वो लिमिटेड कर दिया ड्यू टू सम पॉलिसी डिसीजंस, लेकिन जब हम इंटेक की बात करते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में जो क्योंकि इंटेक लिमिटेड होता है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में हमने उसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ के या इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके उसमें अपना योगदान दे करके उस ऑरा को बढ़ाया था, उसको एक्सपेंड किया था। और मुझे याद है ड्यूरिंग 2000 एंड 2010 कितने सारे टीचर्स को जो लोग ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में थे उनको ट्रेंड किया। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इग्नू को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इतने सारे टीचर्स हैं, इनको हमें रीओरिएंट करना है, न्यू पेडागोगी से उनको हमें ट्रेंड करना है, और उस एरिया में हमने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया स्कूल ऑफ एजुकेशन ने। और स्कूल ऑफ एजुकेशन में ये भी मानता हूँ कि इग्नू के ब्रेड और बटर में से एक स्कूल है, क्योंकि एक टाइम था जब हम देश भर में हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे और हम बीएड और एमएड की शिक्षा भी दे रहे थे, और हमारे विद्यार्थी अभी देश के कोने कोने में, मेरे ख्याल से सभी स्कूल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पढ़ा करके और पढ़ करके भी। बिल्कुल, सबसे बड़ी संख्या में इग्नू के पढ़ाए हुए शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, 2009 में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार कानून पास किया, और शिक्षा का अधिकार कानून ये कह रहा था कि 2015 तक सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। 1 अप्रैल 2015 के बाद
जो अप्रशिक्षित शिक्षक होंगे वो पढ़ाने के हकदार नहीं रह जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। 2017 में आकर के जब हम लोगों ने आकलन किया तो पता चला कि लगभग 12.5-13 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं लेकिन अप्रशिक्षित हैं। राष्ट्र के सामने कोई रास्ता नहीं था कि हम उनका प्रशिक्षण कैसे कर पाएं। तब के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक बिल लेके गए पार्लियामेंट को में और एक्सटेंड कराया उसका पीरियड, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 2017-19 में 12.5 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण किया। आप पूरे देश की स्थिति को अगर देख लें तो आपके पास 12.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। उस वक्त हम लोगों ने यह कैलकुलेट किया था कि जितने हमारे पास कॉलेजेस हैं, जितने सीट हैं, उसमें 37 साल लगेगा इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में। यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं और दूरस्थ शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं वो ये समझें कि दूरस्थ शिक्षा में वो ताकत है कि एक बड़ी संख्या को छोटे समय में शिक्षा प्रशिक्षण पहुंचा सकती है। तो यही काम शिक्षा विद्यापीठ करता है कि हम बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं। तो बीएड प्रोग्राम जो मेरा है वो हम 2,500 सीट हमारे पास है, जो एनसीटी का अप्रूवल है उसके हिसाब से, जो बहुत कम है। हम लगातार मांग करते रहें कि इसको बढ़ाना चाहिए। हमको बड़े राष्ट्र को पहुंचना है, बड़े राष्ट्र की सेवा करनी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बारी बारी से ये कह रहे हैं कि हम द्वार तक पहुंचाएंगे, सबों को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो यह निर्णय कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विरोधाभास है प्रधानमंत्री के विचार का। इसको बढ़ाना चाहिए और पूरे देश में हर राज्य में हमें शिक्षकों में प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, देखिए प्रशिक्षण कोई एक बार जीवन में नहीं होने की चीज है। हम एक बार प्रशिक्षित होते हैं, पढ़ाने लगते हैं, लेकिन किताबें बदल जाती हैं, कंटेंट बदल जाता है, करिकुलम बदल जाता है, प्रशिक्षक वही रहते हैं। दुनिया के अच्छे जो देश हैं जो शिक्षा में बेहतर कर रहे हैं वो अपने शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण करते रहते हैं, और ये काम दूरस्थ शिक्षा से ही होना चाहिए। जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना रहे थे, मेरा शिरकत रहा है उसमें, मैं खास करके विद्यालय शिक्षा से जुड़ा रहा। हम लोगों ने 50 घंटे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की है। उसमें 1.5 करोड़ विद्यालयों के शिक्षक हैं, लगभग 25-27 लाख शिक्षक उच्च शिक्षा में पढ़ाते हैं और 1.5 करोड़ शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाते हैं। इन 1.5 करोड़ शिक्षकों को हर साल 50 घंटे का प्रशिक्षण कौन देगा? ये हम लोगों ने तब यही सोचा था कि ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होगा, शिक्षक स्व अध्ययन के माध्यम से ये करेंगे। शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण तो जरूरी है, उनको अपडेट करना जरूरी है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो दूरस्थ शिक्षा ही कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं और पुनः प्रशिक्षण में लगातार कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में दूरस्थ शिक्षा का योगदान हो सकता है, तो हम वो करते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम, आपने तो 2 ही की चर्चा की, मास्टर इन एजुकेशन एमएड जो अब बंद है वो हम नहीं ऑफर कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पुनः हमें अनुमति देगी कि मैं उस कार्यक्रम को चलाऊं, मेरा विद्यापीठ चलाए, और हम चाहते हैं चलाना। दूसरा बीएड है जो कि हम लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाते हैं, 2,500 सीट हैं। उसके लिए हम एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं, जो लोग पास करते हैं उनको राज्यों के आधार पर, जिन राज्यों से अच्छे रिजल्ट होते हैं उनमें सेंटर्स बना करके उनका प्रशिक्षण कराते हैं। तो अभी वो 2,500 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% एक्स्ट्रा सीटें हैं, ये है। लेकिन तीसरा जो बीएड कार्यक्रम अब मेरे पास आ रहा है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह तय किया कि पहले बैच में हम दूरस्थ शिक्षा से आईटेप नहीं कराएंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। तो पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में चलाने जा रही है। आपके सुनने वाले शायद ज्यादातर शिक्षक या भावी शिक्षक होंगे, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये 4 साल का कार्यक्रम होगा। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण अब 4 वर्षों का होगा। पहले यह 2 साल का था, अभी भी 2 साल का है, जिसको हम 4 साल करने जा रहे हैं। क्या होगा? हम पहले केवल पढ़ाने का प्रशिक्षण करते थे,
लेकिन दुनिया का उदाहरण इससे उल्टा है। जहां भी अच्छा प्रशिक्षण होता है शिक्षकों का, वो विषय और पढ़ाने का प्रशिक्षण, विषय और पढ़ाने का प्रशिक्षण। जैसे कोई अगर फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है तो फिजिक्स पढ़ेगा, साथ में इसको कैसे पढ़ाया जाए ये भी सीखेगा। अब ये हम भारत में भी ला रहे हैं, जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से लाएंगे। तो अब इग्नू पहली बार देश में 42 संस्थाओं को ये अनुमति मिली है कि वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करें, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का शिक्षा विद्यापीठ इस कार्यक्रम को चलाएगा। तो हम 300 विद्यार्थियों को फेस टू फेस मोड में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कराएंगे। 100 विद्यार्थी बीए बीएड करेंगे, 100 विद्यार्थी बीएससी बीएड करेंगे और 100 विद्यार्थी बीकॉम बीएड करेंगे। इन विद्यार्थियों को भावना जी ये छूट रहेगी कि ये 3 साल के बाद अगर चाहें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रोविजन लेके आई है, उसके आधार पर 3 साल के बाद ये बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री लेके निकल भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो विद्यार्थी 70% से ज्यादा अंक लाएंगे, जैसा अभी नीति कह रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, वो चौथे वर्ष में जाएंगे और फुल फ्लेज्ड बीएड का उनको फिर मिलेगा, तो वो बीए बीएड हो जाएंगे। अब यही जाकर के एलिजिबल होंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो आपकी बात सुन के जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा, काफी हमारे दर्शक इससे उत्साहित हो गए होंगे सुनकर, तो शायद वो ये भी जानना चाहेंगे कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये हम उनको बता दें फिर कार्यक्रम में आगे बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि इस चर्चा को सुन करके तमाम विद्यार्थी उत्सुक होंगे कि हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करें। देखिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन 12वीं के बाद होगा और इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नेशन वाइड एडमिशन टेस्ट, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से कहते हैं। हर कोई जो शिक्षक बनना चाहता है वो नहीं बन पाएगा, उसको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा और उस एप्टीट्यूड के माध्यम से जो लोग पास होंगे वही इन संस्थाओं में एडमिशन लेंगे। तो ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जब ये विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, अभी तो पहला बैच एडमिट हो चुका है, जैसा कि हमने बताया कि 42 संस्थाओं को ये अनुमति दी गई है कि वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कराएं। अगले बैच में शायद 100 तक जाने की इच्छा है एनसीटी की। तो एनटीए ये टेस्ट करेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट करके इनका एडमिशन करेगा। अब कोई भी विद्यार्थी देश के किसी भी संस्था के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका एडमिशन हो सकता है। मान लीजिए मणिपुर का कोई विद्यार्थी है और वो दिल्ली में इग्नू में पढ़ना चाहता है, तो फॉर्म भरे, अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है और इग्नू के मेरिट में आ जाता है तो इग्नू में आके पढ़ेगा। तो हम पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगले बैच के एडमिशन का मुझे लगता है ऐसा कि ये मार्च अप्रैल तक आएगा। उसी वक्त आपका +2 का रिजल्ट भी आता है, तो जब +2 का रिजल्ट आएगा उसी वक्त एनटीए आईटेप का एडमिशन टेस्ट करेगी, उसके बाद ये संस्थाएं शुरू करेंगी। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। पहले बैच में थोड़ा देर हुआ है क्योंकि हम सब सीख रहे थे और कर रहे थे, तो हम पहला बैच शुरू कर रहे हैं। 3 चीजें +2 के बाद शुरू होगा। आपको 3 स्ट्रीम में सेलेक्ट करना पड़ेगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। लेकिन भावना जी एक चीज और बता दो कि ये तो सेकेंडरी के टीचर की बात मैं किया जी। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि विद्यालय शिक्षा को हम 4 स्ट्रीम में बांट रहे हैं। पहला फाउंडेशन है, दूसरा प्रिपरेटरी है, तीसरा मिडिल है, चौथा सेकेंडरी है। तो इन चारों स्ट्रीम में एडमिशन होगा। लेकिन हम अभी थोड़ा विराम लेते हैं और विराम से जब लौटेंगे तो इन पर चर्चा विस्तार से करेंगे और बताएंगे कि ये चारों स्ट्रीम क्या है और कैसे इसमें पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। विराम के बाद हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, हमारे साथ बने रहिए।
Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. Ignou employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. वेलकम बैक। हमारे अंतराल के बाद हम अपने दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं और अंतराल पे जाने से पहले प्रोफेसर शर्मा से चर्चा हो रही थी और वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं किन्हीं कारणवश, मैं उनको बता दूं कि आज हम इग्नू की शिक्षा विद्यापीठ के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, उन पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ उन सारी विषयों के बारे में और जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा विद्यापीठ से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे माइंड्स को एनरिच कर रहे हैं प्रोफेसर सीबी शर्मा, जो हैं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ के इग्नू में। और ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक मैल्कम एक्स का कोटेशन था दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन, और हम ओपन यूनिवर्सिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा काम ही यही है कि हम सही चीजें दिमाग में डालें और एक ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो राष्ट्र नहीं विश्व के लिए उपयुक्त पर्सन है, ग्लोबल
ह्यूमनिस्ट इंडिविजुअल्स। तो बहुत सही आपने कहा, और इसी का प्रयास भावना जी जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो है। देखिए, आज तक हम 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर रहे थे, पहली बार 4 साल करने जा रहे हैं। और जो दूसरी बड़ी बात है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग होना चाहिए। हमने बीएड के नाम से एक ही कार्यक्रम चलाया जो केवल 14 से 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में बांटा है। पहला है फाउंडेशन जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। दूसरा है प्रिपरेटरी जो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। तीसरा है मिडिल जो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और चौथा है सेकेंडरी जो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। अब शिक्षक प्रशिक्षण भी इन 4 कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगा। तो आईटेप जो है, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड होगा, वैसे ही बीएड फाउंडेशन होगा, बीएड प्रिपरेटरी होगा, बीएड मिडिल होगा। तो इनमें भी दाखिला इस बार लिया गया है छोटी संख्या में। जो सुनने वाले, देखने वाले ये चाहते हैं कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं, उनको पढ़ाने में मन लगता है, आप तैयारी करिए। और अगर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो अगले साल निश्चित तौर पर आईटेप एडमिशन के लिए फॉर्म भरिए और फाउंडेशन चुनिएगा कि आप 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, एक परेशानी रही हमारे देश में कि जो सेकेंडरी को पढ़ाते थे, जिनको हम टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते थे, वो हमेशा ये प्रयास करते रहते थे कि हम सीनियर सेकेंडरी को या 11वीं 12वीं को पढ़ाएं और पीजीटी कहलाएं। उनकी सैलरी भी ज्यादा थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जब शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे तो कहा था कि जो सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो सबसे जरूरी काम करते हैं, वही तो फाउंडेशन डालते हैं पढ़ाने का, उनकी सैलरी भी क्यों कम हो। तो आने वाले समय में उनके लिए भी अलग से प्रशिक्षण होगा, आईटेप का जो फाउंडेशन होगा, जो आईटेप प्रिपरेटरी होगा, आईटेप मिडिल होगा, आईटेप सेकेंडरी होगा। मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर इस चर्चा के बाद उत्सुक होंगे कि आप जाने कि शिक्षक प्रशिक्षण में क्या बदलाव आ रहा है और स्वयं पता करेंगे। नहीं तो आप शिक्षा विद्यापीठ के ईमेल आईडी soe@ignou.ac.in पर आप मेल भेजिए, हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब भी भेजेंगे। इसके आगे की चर्चा हम करें कि हम और किन क्षेत्रों में काम करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका यही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अवश्य वो विद्यार्थी या वो भावी विद्यार्थी भी जुड़े होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई और कार्यक्रम है जो शिक्षा विद्यापीठ चलाती है। तो द प्रोग्राम्स, द बास्केट ऑफ द स्कूल ऑफ एजुकेशन is full of a wide array of programs. जी बिल्कुल। And we would not want to leave out any of them. देखिए, बहुत बढ़िया आपने हमको मौका दिया है कि जो प्रोफेशनल टीचर तैयार करने के जो एरियाज हैं, जो बीएड और एमएड या आईटेप के थ्रू करते हैं हम, लेकिन हम एमए एजुकेशन भी देते हैं। ये इनफैक्ट इग्नू का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। देश भर में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो एमए एजुकेशन करके भी पढ़ा सकते हैं। मैं ये बात निश्चित तौर पर साझा करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह निर्णय दे दिया है कि एमए एजुकेशन और एमएड में कोई भेद नहीं होगा, ये दोनों बराबर के डिग्री हैं। तो जो लोग एमए एजुकेशन करते हैं इग्नू से, वो जाकर के विद्यालयों में पढ़ा भी सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है एमए एजुकेशन का। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि बहुत सारी ऐसी माताएं जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नौकरी नहीं करती हैं, और आपके बच्चे हैं, उनको समझना, उनको पढ़ाना, उनके लिए अच्छी पढ़ाई कैसे कराई जाए, उनको किन सुविधाओं मुहैया कराया जाए, ये सब समझने के लिए भी आप एमए एजुकेशन कर सकती हैं। मैं जानबूझ करके हाउसवाइफ्स को एड्रेस कर रहा हूं, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। दूसरा, वैसे लोग जो छोटे शहरों में या किसी कारणों से नौकरी नहीं करते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको भी ये कार्यक्रम करना चाहिए। आप समझेंगे कि पेडागॉजी क्या है। तो शिक्षा विद्यापीठ का एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, एमए एजुकेशन। दिस इज अ प्रोग्राम विच इज वेरी सूटेबल फॉर दोज हु आर वेल एजुकेटेड, they have children or they handle children or they who want to understand education, even those who
provide private tuition, they can also do this program and they would hugely benefit from this program. Besides the Master of Education program, we have postgraduate diploma in school leadership and management. Teachers who are in school and dream or intend to become principal someday. हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं प्रोफेसर शर्मा राजस्थान से, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं मैं उनको संबोधित कर रही हूँ, क्या वो हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, हमारा संपर्क टूट गया है। जी बिल्कुल, संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपको पुनः ये बता दूं कि आपके अगर प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल भेजें soe@ignou.ac.in पर। आपके मेल का निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो हम छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाते हैं जो विशेष समूह के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में और वो आगे चल के लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं, स्कूल का फाइनेंसेस कैसे मैनेज किया जाए, डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, स्कूल के रिसोर्सेज कैसे मैनेज किए जाते हैं, इन सबको आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारा एक अच्छा डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के टीचर हैं, आप टेक्नोलॉजी हैंडल करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में क्या हुए हैं और उनका हम उपयोग कैसे विद्यालयों में कर सकते हैं, तो आप ये कार्यक्रम भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन की चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप जानना चाहते हैं उच्च शिक्षा क्या है, इसका दर्शन क्या है, there is a whole philosophy behind higher education. Why provide higher education? You can just do 12 and work, but then why do we need a specialist? So you can do PGDHE, postgraduate diploma in pre-primary education. Although we have put this program on hold because we are undergoing a revamping of the courses in teacher education, so postgraduate diploma in pre-primary is on the hold. We have another program as postgraduate diploma in educational management and administration. Similarly, those teachers who have to manage schools, their management, their administration, deal with government, deal with other issues of the government. You have to file your reports, you have to get accreditation done, you have to get a regular updation of school resources. And there are various agencies now coming in which are accrediting agencies and re-accrediting agencies. So you can know what are they. Another major area of education is adult education. You would know that a large number of adults in various countries, including India, are either illiterate or semi-literate. So to handle them, we have a whole area. In fact, we had done away with, or it was on the back burner in the period pre-National Education Policy 2020. But the National Education Policy 2020 has reinstated the adult and lifelong learning. So again, if you are interested in adult education, if you want to work in that area, there is a diploma. In fact, now also a master's in adult education. We have come up with a number of courses in adult education. I would definitely like to invite you and request you to visit the website of Ignou and go to the School of Education web page. We have all the courses mentioned there and details of the courses. So you would be able to know who should take admission, what is the duration, what is the fees, which are the courses that are taught. And in fact, we also have the material online. So before really taking admission, you can look at the material, you can convince yourself, you assure yourself that you have chosen the right program. So similarly, diplomas in adult education and professional development of teachers. That is another very important certificate that we offer, certificate in professional development of teachers. This at the moment we are offering to the teachers of Navodaya Vidyalaya.
you would know, Navodaya Vidyalaya is a very different system of schooling. It's completely residential. The philosophy is different. The children who are selected and put there are different. Even the work, the job of the teachers is very different. Handling a school, teaching in a classroom, and teaching children who are continuously on a campus, in hostel, is entirely different ballgame. Right. Their psyche, their whole understanding, their behavior changes when they are in a hostel or on a residential. So, we have tailor-made this program for the teachers of Navodaya Vidyalaya. Bhavanaji, I would definitely like to share with your viewers that Ignou and School of Education particularly takes up special projects for teachers of a particular system of education. Right. Now, you have Kendriya Vidyalaya, you have Navodaya Vidyalaya, you have similarly Sainik schools, right, and other schools. We take up projects in conjunction with these agencies, understand their requirement, and design and develop projects especially for them. Like we have undertaken to train 10,000 Navodaya Vidyalaya teachers. Right. We are in the process at the moment. We have already trained more than 3,000 teachers, and we are going ahead with training of other teachers. The major assignment of training of teachers in Navodaya Vidyalaya becomes the campus life. Right. And how do they cope up with the pressure of a campus life? Also, how best they can prepare these students for the life, because they are staying away from parents. So the challenge is, one is content. How do we transact content? The second is, how do we handle a contrived situation of a campus life? True. That's very I'm emphasizing on this because there might be institutions, there might be systems which would like to get their teachers trained for a particular purpose. Ignou undertakes such projects and trains teachers. Another very important program which I'm very keen to share, although the time is running out fast, is Certificate in Guidance. Young parents, teachers of very young children often don't understand who is a 3-year-old child. We don't know, because we are not all parents. And even if we are parents, we had reared our children long back, we have forgotten how to handle a child. So, Certificate in Guidance is a very good program of the School of Education, which gives all the ideas to parents and teachers who are handling very, very young children. In fact, those teachers who are teaching to 3 to 8, आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए मैं कहूँगा, उनके लिए कार्यक्रम अभी इग्नू तैयार कर रहा है. लेकिन जो पढ़ा रहे हैं आंगनवाड़ी में, जो पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, जो माता पिता हैं छोटे बच्चों के, उनको निश्चित तौर पर ये सर्टिफिकेट इन गाइडेंस कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है इग्नू का, वो करना चाहिए. वो समझ पाएंगे कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है. हम उनको भी बड़े बच्चों जैसा ट्रीट करने लग जाते हैं. तो अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको कि आप पढ़ाते हैं या हैंडल करते हैं, तो सर्टिफिकेट इन गाइडेंस प्रोग्राम आपको करना चाहिए. समय की कमी है, इसलिए मैं इस पर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम जिसकी चर्चा मैं खत्म करने से पहले जरूर करूं कि शोध एक ऐसा एरिया है. रिसर्च इज एन एरिया वेयर इग्नू and School of Education in particular puts great emphasis. Right. Those students who intend to become teachers and would like to do research, there is a very robust PhD program of the School of Education. We have a rigorous system of admission to the PhD program. I would especially invite those and request those who have got the NET cleared to apply to Ignou and write their exams. In fact, some students are exempted from writing the exam as well. They can be called directly for the interviews and then admitted. Ignou provides large scope for research in various areas. I am saying this large scope because we have a very large department of faculty with various backgrounds. We have national experts from psychology, from sociology, from special education. We are a large department or people who have very extensive experience and expertise in handling special education. The Rehabilitation Council of India has recently
approved Ignou School of Education as a department to offer the Bachelor of Education in Special Education and Master of Education in Special Education. We would now be preparing teachers to go and become teachers of special children. They will not only be teaching special children, they would be normal BA teachers, but specialization in handling special children. I'm sure you would know that the Disability Act was revised in 2016 on the insistence of the Honorable Prime Minister Narendra Modi, and various new areas of disability have been included. We handle all of them. I would definitely request, if you are teaching to children or if you are in a school where you have differently abled children, disabled children, you must do this program. This will give you a great understanding in handling differently abled, disabled children. These are some of the areas. I'm sure you have other things to handle. We are left with only 9 minutes. So perhaps... Thank you so much, Professor Sharma. The spectrum of programs and the large body of work that School of Education has been doing and is still doing, I think it is, it is an understanding. It gives us an understanding of the fact that there is so much contribution that the School of Education is making, not only for the Ignou students, but for teachers and parents, maybe those who just want to understand for their own appreciation of education at various levels of a person's growth. This is an amazing range that the school is covering, and I would like to offer my congratulations to the school for doing such a lot. Before we go ahead to other aspects, I would also want to ask Dr. Bharat Bhushan, who is the director SSC, who is there with us today. I would like to ask him, we have been talking about the programs of the School of Education, and Professor Sharma has given us a comprehensive and an extensive understanding, and I'm sure our viewers are raring for more. So before we do that and give them further details about how they can gather more information, I'm sure they would also want to know about the recognition status of Ignou's programs, about the employability of the programs, because every person who passes out, they want to do it with a certain aim and objective in mind. Yeah, thank you, Dr. Bhavana. जो प्रोग्राम का नाम है आपका विश्वास हमारा प्रयास, आज प्रोफेसर सीबी शर्मा जी ने उसको बहुत हद तक चरितार्थ किया है जी। जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के एक इग्नो, एक बड़ी अम्ब्रेला के तहत जो उनके एफर्ट्स हैं, उनकी जो रीच है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमारे विद्यार्थियों से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे शेयर किए हैं। और उसमें मुझे बिल्कुल कुछ भी संशय नहीं है, बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना स्कूल्स में से एक है। मुझे याद है स्कूल ऑफ एजुकेशन में से ही डिस्टेंस एजुकेशन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम निकली और फिर स्ट्राइड उन्हीं का बेबी बना एक इंडिपेंडेंट सेंटर और डिवीजन के नाते। क्योंकि जैसे शर्मा जी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के तहत हम सिर्फ शिक्षा ही प्रदान नहीं कर रहे, हम शिक्षाविद भी को भी ट्रेनिंग देते हैं। और उसके लिए एक विंग बना जिसको हम स्ट्राइड कहते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन डिस्टेंस एजुकेशन। शर्मा जी ने शुरू में एक बात कही थी कि हम शिक्षा देने के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हम ट्रेन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल एजुकेशन में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, हायर एजुकेशन में जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग का क्या। तो वह ट्रेनिंग के एरिया में भी हम जो स्ट्राइड के माध्यम से हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन से, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्ट्राइड है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं रिफ्रेशर्स के, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज रिफ्रेशर कोर्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री। जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, मैं अपने विद्यार्थियों को और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उनको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बना है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, और इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो भी प्रक्रिया देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो सब फॉलो किए जाते हैं। जैसे एकेडमिक काउंसिल है, स्कूल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोग्राम को कैसे कंसीव करना है और उसको कैसे लॉन्च करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्योंकि विद्यार्थियों को या आमतौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिर्फ तभी पता लगता है जब प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें सालों का वक्त लगता है प्रोग्राम को। तो जहाँ तक रिकग्निशन की बात है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इग्नू सारे ही एफर्ट्स पूरे करते हैं, और इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वे अपनी अपनी जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे अगर हम जनरल प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से सभी प्रोग्राम हमारे रिकग्नाइज्ड हैं। अगर हम टेक्निकल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की, MCA, MBA, उसके लिए एक बॉडी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से हमारे सारे प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी नर्सिंग के प्रोग्राम भी ऑफर करती है। नर्सिंग के जो प्रोग्राम है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। और जिस स्कूल के बारे में आज हमने चर्चा की, स्कूल ऑफ एजुकेशन के वो सभी प्रोग्राम जिनको रिकग्निशन की ज़रूरत है अपेक्स बॉडी से, जैसा प्रोफ शर्मा जी ने शुरू में अंदाज दिया था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अपेक्स बॉडी है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनसे हमारे प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड हैं। और लास्ट में एक और छोटा सा एरिया आपने टच किया सर, वो था स्पेशल एजुकेशन, जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्कूल ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेंगे, और वो बहुत जोरों से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। और यह एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय काम नहीं कर रहे हैं। इग्नू अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और बढ़ चढ़ के देश के विकास में, और जो देश की हमारी नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम फुलफिल करने में आगे बढ़ते हैं। तो उस एरिया में भी हम चल रहे हैं आगे। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की इक्वलेंस की बात है, जब हम दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टाइम एंड अगेन they have come out with writing that there is no difference as far as quality, उसका स्ट्रक्चर को सोचें। वो सभी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से जो प्रोग्राम एक्वायर करते हैं और डिस्टेंस से एक्वायर करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात करें और हायर एजुकेशन में जाने की बात करें। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज का प्रोग्राम न केवल बहुत ज्ञानवर्धक रहा बल्कि बहुत लाइवली रहा, और हमारे जितना मैंने एंजॉय किया है आज के प्रोग्राम को, मुझे यकीन है हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि इसी डायरेक्शन में अगर हमारे विद्यार्थियों को, दर्शकों को कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप अवश्य स्कूल ऑफ एजुकेशन को कांटेक्ट करें। इग्नू की वेबसाइट पे सारी कांटेक्ट डिटेल्स उपलब्ध हैं। साथ ही आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो। वो सारी जानकारी भी SSC के वेब पेज पे उपलब्ध है। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में किसी भी लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देकर देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहें, उनके लिए हम आपके लिए एक लार्ज एरे ऑफ प्रोग्राम्स लेके इग्नू की तरफ से उपस्थित हैं। आप आएं और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जी, तो इसी के साथ नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
Welcome to all. Teachers in classrooms, they are facing with the initiative to how to increase the interest of the learners. For that purpose, they may use different strategies. One type of strategy, it is to inculcate or to use audiovisual materials in the classroom. In the presentation of the selection of the audiovisual materials, what is important? It's a theory that is put forward by Edgar Dale's cone of experience. In today's discussion, we are going to discuss about what is the cone of experience, how the cone of experience is classified into different stages. So this topic is part of MAAE 004 of Master of Arts in Adult Education program that is provided by School of Education. In the concept of the cone of experience, generally two questions arises. What are the two questions is that the teacher may ask, how can teachers use audiovisual materials to promote learning that persists? Number two, how can audiovisual materials enable students to enjoy learning through vicarious experiences? So here, these two learning questions that we have seen, it is important in each and every teaching strategy, or especially while selecting the audio-visual materials. We know that the learning aids, the teaching learning aids play an important role in the process of learning, and there the teacher has to use some kind of discretion what type of learning aid should be selected. In this context, Edgar Dale's cone of experience is becoming more important. So Dale's work, when we look at the Dale's work, he is indebted to John Dewey. So how he is indebted to John Dewey is that Dewey stressed the importance of the continuity of learning experiences from schools into the real world and argued for a greater focus on higher order outcomes and meaningful learning. So here we can see that how John Dewey has emphasized the pedocentric approach to learning that influences Dale's work, that is cone of experiences. So as an introduction, when we look, when this cone of experiences was introduced, it is actually published in the book Audio-Visual Methods in Teaching, which was published by Edgar Dale in the year 1946. So how Dale introduced the cone of experience in that publication, where he stated that what is important is the cone plays different educational media and methods in a continuum, that the continuum is going on from the most concrete to the abstract level. So the continuum is going from the bottom to the top, where the bottom part consists of the concrete things, and while coming to the top, it is dealing with the abstract senses.
So when a learner moves from the direct purposeful learning, there we can see that the participation of the learners are more. And from that level, when the learner moves to the top, what is coming is that the abstractness is increasing, where the participants, learners are becoming less and they are becoming more observers. And then they are becoming the real thinkers when it comes into the actual abstract terms. So here, as I stated, his work is influenced by the theory put forward by John Dewey, so that we can see that Dale integrated Bruner's three modes of learning. We can see that Bruner's discovery model of learning is important, where we can see the integration of the three modes of learning into the cone by categorizing learning experiences into three modes. When we look at the theory of Bruner, we can see that there are the three stages, such as the inactive stage, the iconic stage, and the symbolic experience. So let us have a little bit discussion on the three stages that was put forward by Bruner, where we can see that Bruner emphasizes the first stage or termed the first stage as inactive. Inactive means learning by doing. So here, what is happening to the children? The children try to understand the concepts by imaginary things. So in imagination, they have different kinds of things. So they are utilizing that type of thinking in their thought process. So their information is made through imagination. Then comes the iconic stage, where the learning through observation is happening. So this iconic stage, we can see that they try to imbibe the information through their senses. That means they are observing many things, and through their senses they try to understand the information. Then coming to the symbolic experience, that is, they have reached the higher stages where they try to understand the abstract terms. For understanding the abstract terms, what is important is the signs and symbols are becoming more important. So when we look at the screen, we can see that how Bruner's three modes of learning, it is integrated into the cone of experience. There we can see that at the bottom, there the direct purposeful experience is coming, where it covers the direct purposeful experiences, contrived experiences, and dramatized experiences. Coming to the iconic experiences, that is learning through observation, there covers demonstration, study trip, exhibits, educational television, motion pictures, recording, radio, and still pictures. These things are coming at the iconic experiences. Then comes the symbolic experience, that is learning through abstraction, where we can see the visual symbols and the verbal symbols. So this is about the integration of the Bruner's three stages into the mode of or into the cone of experiences. So let us look at the cone of experiences in more detail. What we can understand is that generally the cone of experience, what is presented by Edgar Dale, whether it is actually conceptualized in the real sense. This is one kind of thing that we have to debate.
as we browse through the Google search, we can see different shapes that is coming. So here we can see that there are shapes such as telling about the different percentages, regarding the percentages. So here what is coming important is that the percentage of the retention of the information is important. In some figures, when we look, we can see that there are different stages explaining, as well as what we can see is that besides the different stages, there gives the numbers or the percentages. So here we can state that the corrupted cone, the common misconceptions about the cone of experience is giving. So here Dale intended to produce an intuitive model of the concreteness of various kinds of audio-visual media. So here the cone is sometimes wrongly classified as the learning pyramid or the remembering cone or the cone of learning. So this is the way that why we can see that the cone of experience is interpreted in the media. So what is important here that we have to show is that the misinterpreted cone, how is it misinterpreted? When we look at the misinterpreted, we can see that in some figures it is represented as percentages or numbers. That generally what is that percentages or numbers denote is that it is related with the retention of the learned facts or the information. So what is the retention of learning? Normally, there we can see that 10% of what a learner read, 20% of what they hear, the 30% of what they see, 50% of what they hear and see, 70% of what they say and write, and 90% of what they do. So in this way, some kind of percentages are given against the 11 stages of the cone of experiences. So here, when we look at the cone of experiences, we can see that that is not important, the percentages. It is misinterpreted. Edgar Dale doesn't make the level of the cone equivalent to the level of the learner's ability to recall. It's not like that. So first, there are some kind of misconceptions about the concept of the cone of experiences. One misconception is that the percentage. It's not the percentage is important. So what the next thing about the figure, a pyramidical shape, or sometimes the name itself denote that it is the shape of a cone. But when we look at the shape, it has nothing to do with Edgar Dale's actual work. We can see that it is like an inverted cone. Just for a visual analogy, he has used the shape of the cone. So what is important here is that it's a visual analogy where the abstractness is coming at the top and the concreteness is starting at the beginning of the cone. So this is not a hierarchy of learning efficiency. It's like a visual analogy. So while climbing through this visual analogy, the learner's abstractness is increasing. That is important. So there, the second misconception regarding the shape, that is clear. And the third one, where he emphasized that more concrete experiences should be given to learners. When you read some literatures, you can see that such type of connotations are there. It's not like that.
because all the learning, all the experiences, whether it is concrete or abstract, it has value to the learners. It has something to give to the learners. So what is important is that the teacher should make a balance between the concreteness and the abstractness while selecting different media or mediums to present the facts. That is an important thing. So here, the second misconception is also clarified. So now we can see that the actual code, how it represents. So the actual code consists of the 11 stages. So that actual cone of experience is displayed on the screen, that at the bottom, what is coming? The direct purposeful experiences. So here, the actual cone looks like the circles where the concreteness is at the bottom and going up, the abstractness is increasing. The 11 stages, that is direct purposeful experiences, then the contrived experiences, the dramatized experiences, demonstrations, study trips, exhibits, educational television, motion pictures, recordings, radio and still pictures, visual symbols and verbal symbols. So this is the hierarchy of the cone of experiences. So here at the bottom, when we look, we can see that this include the direct experiences, contrived experiences and dramatized experiences. So when we take the case of the direct purposeful experiences, we can see that the learner is doing something and getting the learning directly. That learning by doing is coming. Contrived experiences, that some kind of, it has some kind of relationship with the reality, so that some kind of models or something is prepared and then showing to the learners. Then comes the dramatized experiences, where we can see the co-creation of the reality. The learners are becoming the participants for the creation or the co-creation of the learning experiences where they can attain the knowledge. Then comes the study trips. What do we mean by the study trips? The study trips, when we look at that, it has some real experiences, going through different places, observing and having a first-hand information. Then comes the exhibits. So there, through the exhibitions or what is exhibited in the museum, the learners will get an understanding that what an object is. Or suppose different kinds of rocks. In the museums, they can see the types of rocks so that they will get a replica of the real objects. Then comes the educational television and motion pictures, which can be combined together, where we can say that it is an example of this audio and visual materials, where the learners will get the senses through eyes. They will get some kind of understanding through ear. They can listen to the words. So this direct purposeful experiences, which is at the bottom, that the learners are using different senses. The number of senses is more at the bottom. And when it comes to the upward, where we can see the number of senses is reducing, then comes the visual symbols and verbal symbols. There, the abstractness is more. The number of the participants who are actively engaged is less. They are becoming observers. They are using their thinking capacity to think more. So this is happening at the higher levels. And we can see that the number of senses using is reducing when it comes to the upward. So this is about the real cone of experiences, where Edgar Dale has proposed in his publications of the audiovisual methods in teaching.
in 1946, and in 1969 it was revised. So in what way this cone of experiences is beneficial? When we think of the benefits of the cone of experiences, the first one, that it facilitates effective and meaningful learning. So the learning should make meaningful, so that the teacher should use different mediums and medias in order to get the interest of the learners. Number two, use a variety of materials and mediums to maximize the learner experiences. So it's monotonous to use the one type of method or one kind of verbal explanation so that the attention of the learners may reduce. And the third benefit that we can think is that this cone of experience, it helps us to think about the sensory impact of our learning content. So what is the sensory impact is that how much senses are used by the learners in order to retain a particular information. In such cases, at the lower level of the classes, the primary classes, we can see that the direct purposeful experiences are more useful than the abstracting. So the number of senses used by the learners will be more at the lower level, and coming to the higher level, the abstractness can be increased so that they become more thinkers rather than the observers or the participants. That is important. And another one where the cone of experience, it has more influence, that is in the media field. How is it important is that Bolcom has proposed one aspect, that is multimedia cone of abstraction. That on the screen you can see what is this multimedia cone of abstraction. So here it is proposed by Bokel et al. And the term is multimedia cone of abstraction. From the less abstract to the more abstract it's going. That is the virtual reality, video, image, non-verbal audio, narration, text and simple. So this is another important influence that was made by the Edgar Dale's cone of experiences. We can see that I have already told the number of senses used by the learners, that should be more, but coming at the higher stages, the number of senses will be reduced, where the teacher use different kinds of methods in order to clarify the abstract concepts. So it doesn't mean that the concrete experiences should be provided to the learners. It's not like that, because in order to have a meaningful learning experiences, different kinds of medias and mediums should be used by the teachers. So here we can see that this cone of experiences, it is important in the field of learning, in the field of media, and in the field of the developmental process of the learners. So what we can conclude is that the cone of experience, it is very important. As far as the adult learners are concerned, how is it important is that the adult learners' learning process, it includes many abstract concepts. So how does this abstract concept is handled by the teachers, and how they are presenting, whether they are using different kinds of signs, symbols in order to get a clear clarity about the abstract concepts. That is also important. So the misconceptions should be wither away, and the right concepts of the cone of experience, that is, it is a visual analogy where it is not a hierarchy of learning efficiency, and this consists of the 11 stages which range from, it is a continuum from the concreteness to the abstract when it goes at the higher level. Hope that you got a clear clarity about the cone of experience and how it can be used while teaching the learners. Thank you.
people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing. If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Why fieldwork social work is very important. Let's understand various professional characteristics. Among them, fieldwork practicum, fieldwork documentation, and the skills are integral part of professional social work. Dear learners, let's understand Bachelor of Social Work online program and its fieldwork components. Especially this program from Indira Gandhi National Open University School of Social Work. We have started on January 2022. Though it is running parallelly as Bachelor of Social Program in ODL mode as well as online program. So now you can understand we are currently discussing on Bachelor of Social Work online program and what are the fieldwork practicum aspects of it. So many times, many people or professionals can think that how learners can do Bachelor of Social Work online program. It's not only for learners as well as for the professionals and even others can understand, though the program is online program, but the fieldwork is offline. As the profession says that fieldwork practicum is an integral part of our profession. So we are not deviating from the main component of fieldwork practicum, that is offline. Just like that,
the distance mode program and traditional program, we do have a fieldwork practicum that they will have to do it in the field only. To understand the various practical aspects of Bachelor of Social Work program, all our learners have to get into field. That means they will have to visit various organizations, various hospitals, various societies, and various fieldwork settings in their locality, and they will have to practice their theory so that they will learn what exactly they taught in the classrooms will be practically they can see in there and they can implement there. That's why we say fieldwork practicum is an integral part of professional social work. Since we are discussing about Bachelor of Social Work online program, we have made some special components for this program so that our learners, especially those who are in the country and outside the country, since this program is not only for Indian students, we have also got international students like Brazil, Gulf countries, and Bangladesh, Nepal, and Canada as well, Germany, Italy. So we have got several international students. So that, according to the international standards of social work, so we have made certain changes in our field work. That is a very important distinction between ODL program and online program. So now students or the learners can understand. So what are the important aspects of this fieldwork practicum? As every student knows that this is an integral part of professional social work program. In the first semester, they will have to do 25 visits of fieldwork practicum. So this 25 semester is a common for each semester. That means in Bachelor of Social Work, there are 6 semesters. So each semester, 25 visits, they will have to do it in different organizations. That I will explain one by one. In the first semester, the learners have to do 25 visits. Out of 25 visits, 20 visits are agency visits. That means the learners have to identify 20 organizations or agencies or any community organizations working in the field of social welfare in their locality. So they need not to go to far places. They will have to identify 20 organizations for the part of first semester social work practicum with our guidelines. Then they need to get the permission and they will have to do a observational visits there. So basically in the first semester, 20 organizations observational visits that have to be do it for 8 hours. So how they can select the organizations? We have made a certain guidelines for that, and that guideline is uploaded on LMS portal so that every student can download that. So we have made a detailed report on this, how they can select these organizations. That is available on learner management system that can be downloaded by the learners. So what are the eligibility criteria for selecting organization for doing field work? In the first semester, 20 they will have to do it. The first thing is that organization has to be registered. That means they need to have a proper licensing from the state government or any government wherever they are there. The second one, they will have to work in a social welfare field. So for example, we have made a list of organizations where they can, where our students, our learners can, go for field practicum. So the organizations should have a experience, or they should work with children welfare, women welfare, senior citizens welfare, disabled population welfare, or any primary health care center, or secondary health care center, or taluka hospital, or any health setting. Apart from this, there are other organizations identified with youth seva or youth services, or services for marginalized sector population like aged population, women and other population, and any organization working for war victims or terrorism victims or any kind of social welfare organizations.
So these are the organizations definitely will be there in the particular locality where our student is living. They will have to identify with our guidelines, and I'm sure even international students can get this kind of organization in their locality. So our students have to identify such organizations and get a permission from at least 20 as part of first semester. If they get 20 organizations list, they need to show our ID card. If they need, we can also provide them a permission letter so that they can take print of it and get the permission from the concerned organization, their locality. Once they get 20 organizations permission, the learners, they will have to visit each organization at least for 8 hours. So that is the international standard fieldwork duration. So 8 hours they will have to get from our learners. I mean, they will have to do a practicum there. So for that, again, we have given the guidelines what exactly the learners have to do it in particular center. So there is a field practicum guidelines that is again going with the particular their curriculum, the syllabus. So if they are in the first semester curriculum, they will have to practice in that organization with the help of fieldwork supervisor from our university and with the help of the local organization supervisor. So the learners will get a supervision, the fieldwork practicum supervision, both the sides. One is from Ignou, the regional center will provide a fieldwork supervisor. Another one with the organization wherever they are doing it. They will also have a supervisor so that the learners will get supervision from both the sides, and ultimately they can learn professional social work semester by semester. Now I am going to discuss another very important aspect. So once they get 20 organizations permission in the first semester, and they will do fieldwork practicum, and then remaining 5 visits are considered as fieldwork supervision with their respective fieldwork supervisor. That fieldwork supervisor will be provided by the Ignou. That means under Ignou, regional center will be there. Each regional center will have a set of learners under them. For them, our regional center will provide academic supervisor or fieldwork supervisor. That fieldwork supervisor for semester, for 5 visits, in-depth discussion, in-depth visits or in-depth kind of discussions will happen with the learners. So whatever the fieldwork challenges they are facing, that means the learners are facing, what are the difficulties they are facing, they can discuss with fieldwork supervisor via online mode. Since this program is online, so they can discuss through Google Meet, they can discuss through Skype, and very easy method is they can discuss through audio or video method. Even WhatsApp is also possible. So the learner will get all kind of supervision from fieldwork supervisor, and in turn they will have to practice in their agency. So this is from Ignou, and that organization also will provide academic supervision or fieldwork supervision to the learner. So this is the first semester, and next consequently 2nd to 6th semester there is some slight changes in terms of the fieldwork practicum. So in the first semester 20 organizations they will have to identify as observational visit, whereas in 2nd semester to 6th semesters they need to do 5 observational visits. That means they need to identify 5 new organizations in their locality. They need to get the permission, and they will have to do practicum. That's again for day 8 hours. So that is 5 visits for 2nd semester. Remaining 5 visits in one organization, they will have to do it as a field practicum training. So this is the difference. So field practicum training in 2nd semester onwards up to 6 semesters, 15 days they will have to do it in one organization. So continuously every day for 15 days they will have to visit that organization. They will have to do a field practicum. With that is again go with 2nd semester syllabus, 3rd semester syllabus, wherever they are there. I mean, if they are going for the 2nd semester, they will have to follow 2nd semester syllabus. If they are going for 3rd semester syllabus, like that. So 5 agency visits for 2nd semester, 15 fieldwork practicum visits, and remaining 5 are fieldwork supervision with their fieldwork supervisor. So that fieldwork supervision 5 visits are common. So remaining 20 5 agency visits, 15 are concurrent fieldwork. That is for 2nd semester to 6th semester. So this calculation, this particular procedure, our students need to understand.
in only first semester, 20 agency visits, 5 fieldwork practicum. Second sem onwards, it is 15 concurrent fieldwork in one agency, and remaining 5 are agency visits and 5 are just like that, first semester fieldwork supervision. So total 25 fieldwork agency visits, they will have to do it. So once this is done, every day the trainee have to get a signature from supervisor, so that we can keep their attendance in that organization, and what are the things they have learned. That is very important. So once they visit there for for 8 hours training, so what are things they need to observe there? As every trainee have to learn fieldwork practicum, our trainee is also need to learn the fieldwork practicum based on their syllabus. So in the first semester, they need to understand what is the organization name, what is the objective of organization, what is the main aim of organization, so what is the funding they are getting, from where they are getting, and what are the activities they are doing it, what are the functions they are doing it, and who are all their stakeholders they need to understand. For example, if the organization is working for women, the stakeholders are women, and what is their locality where they are functioning, that need to understand. So it is nothing but the profile of the organization they need to understand, they need to write. Then, so what kind of social welfare programs they are providing, and what kind of measurements they are taking for this kind of population. Are they doing any training activities? Are they providing any skill-based activities? Are they providing any resource mobilization activities? Or are they helping any people in need? So all of them they need to understand. Then there are a number of professionals practicing in this organization. They can learn from them, and they can understand how to maintain documentation, how to write a documentation there. So how to raise funds, how to organize the community programs, and if there are case study programs, group work programs, they can practice all of them. So our main aim to send them for field practicum to practice all our 6 methods. So that will be done from first semester to 6th semester, and they can also practice the counseling process there. Effectively they can work with individual clients and group clients. So this is the basic information. Now once they visit different organizations, they know how to write the report. They'll get supervision from Ignou as well as that organization. Now very important aspect of Bachelor of Social Work online program is that is e-portfolio. That means the students, they need not to write by hand and send the hard copies to study centers or regional center or even headquarters. So we made it very easy and simple method for our learners. That is e-portfolio. E-portfolio, it has that basically this portfolio is developed by Ignou only. And this is a very important special feature of Bachelor of Social Work online program, so that this will be easy for national and international students. This e-portfolio I am going to show you, so that you can learn from me and how to access it. Now see, it is visible. This is our Ignou e-portfolio, that is LMS, Learner Management Service web page. Every learner will get their along with their email ID, they'll get credentials, so that individually they can they can create their own profile. So if they use our profile, I mean their credentials, they can go to their individual credentials like this. So they need on Google, they need to type HTTPS and Ignou Ignou online LMS Ignou.com. So that means if they type this thing, they can go to home page. This is a home page. This is called in short form LMS, Learning Management System. So with this, the learners will get their credentials. They need to type their email ID and the password. So Ignou will provide credentials for each learner, both national and international students. Once they get that, they can change this password as per their requirement. So once they get into this home page, Ignou home page, that is Learner Management System, by using their credentials, the students can see, this is the home page. So students can see the entire program details. This is an easy method for all professional social work learners across the country. They can learn. See here, they can see
what is the program they have enrolled for, and what are the courses under that, and the courses also categorized under each semester. So each semester they can see what kind of programs, the courses they have opted for, and in that the fieldwork practicum journal is also uploaded. So the learners need not to get the hard copy of their syllabus. That is a very important aspect of Bachelor of Social Work online program is they will get a soft copy material from LMS. So they need not to search here and there, ask for copy of soft material. So on LMS they can see their profile. In the profile they will get all the details of courses, and they will also download the soft copy of our material, and from there they can also see assignments. That is very important. So assignments also uploaded on LMS, and there are submission deadlines as well. So everything is online now, everything is on LMS. They can get, they need not to visit a study center, they need not to visit a regional center, they need not to visit headquarters Ignou New Delhi. So they need not to take further efforts. Everything is online, everything is easy. Only thing they need to get proper training, proper awareness. So once they get into all those things, they can see. So they can download their assignment. In the assignment, they can write all the things they need to take. They have to write by hand. Once it is done, assignment, they will have to take snap of that. They have to take a photocopy of that, and they can upload back on LMS only. So that deadline is also they can easily visible. In case the university is going to extend the deadline for assignment submission, fieldwork submission, they will also they can also see the same thing from LMS. That is a very important and easy aspect of Bachelor of Social Work online program. So once they get all the things first semester, theory papers also they can download, and they can also see any announcements. That is very important aspect of the fieldwork practicum, that is e-portfolio. So there, if faculties, for example, I am a faculty of this program coordinator. In case if I am going to make any announcement on this, I will make it on LMS. So learners, they can easily get identified. In the case there are n number of learners in our program, if they want to have a group discussion with the faculty member and program coordinators as well as course coordinators or even the students, they can make a group there and they can have a discussion. So on this LMS portal, it is possible to have a one-to-one discussion with fieldwork supervisor and faculty of this program as well as the individual students. And if they want to have a group discussion, that is also possible. And they can also see announcements here. So once this is done, then the very important, I am going to show you very important aspect, that is, for example, the fieldwork practicum. See, I was talking about fieldwork practicum. The fieldwork practicum, for example, this is the 105. This is a second semester fieldwork practicum. The learners can download here. So each semester fieldwork practicum they can download. For first semester it is 104. The code is. The second one is 105. They can download, and there is instructions as well. They can download. It is editable copy. So dear learners, please do understand. You need not to take print and write and submit. Taking printout is only for assignment, whereas fieldwork journal, it is a very big copy and you need not to take print. You need to just download, and the important aspect of this fieldwork journal is it is a editable e-copy, editable copy. It is in the PDF version. So you can write n number of pages. So from first visit to 25 visits report, you will have to document there. From each visit, you will get enough space to document information, whatever you learnt there or whatever you observed there. So you need not to take print and write and scan again. For uploading. So all those things are not there. It just download each semester fieldwork practicum and save it every day after your fieldwork practicum visit is over from that particular organization, and whatever you learnt, whatever you observed as per our instructions, kindly type there. So once the documentation is over, you can save it. So like that, 25 visits you will have to document, you will have to save it. Once 25 visits are over, you can upload back to LMS. So your job is done. Okay, so again you need not to submit to study center, you need not to submit to regional center or even headquarters. You need not to give it to any person there. So everything is online, and automatically the faculty supervisors, the faculties of this program, they can get notified and they can evaluate. So another very important aspect of this program is
Even assignments also they can be, like assignment submission is also possible, general submission also possible, and the grades, the marks also they can, they can see on LMS. So the fieldwork supervisor can also get access to this, LMS. The fieldwork supervisor, we evaluate his students, fieldwork, journals, assignments, and he or she will grade, so that the learners easily can see what is their marks, what is their grades. So once this is done, for example, each semester we have got like this. Once this is done, the learners can see how many of them have submitted, how many of them have not submitted, how many of them got the gradings. So all of them are possible here. So if they want to, they can, they can inform their faculty supervisor that it has not been evaluated, it's not been assessed. So all of them are possible in this LMS portal. So that is a very unique feature of this program. Dear learners, you may wonder why this special program is developed. So this special program is developed to cater large number of aspirants across the world, so that wherever they are there, with our guidelines, with our simple mechanisms, and with our special features, so they can do professional social work program, and it will be as value as any other traditional and distance mode professional social work programs. And many of our learners, so they are asking for simple clarifications and simple kind of induction meetings. That is also there. So to train them, what we are doing it. So once their admission is over, confirmed with the help of regional center, the faculty supervisors or faculty faculty members from headquarters, we are conducting induction meeting for all the learners in the particular semester across the world, so that we will also give them welcoming note. We will also explain them each and every aspect of the professional social work program. It includes theory, and also it includes practicum aspect, so that our students, our learners should not feel discomfort, or they should not feel that they are lost. So we are there with them to teach all the programs. We do conduct frequent online meetings through Google Meet or Skype or even other platforms. We do conduct induction meetings. So we do conduct Facebook lives. We do conduct radio programs, that IRCs, and we do conduct teleconferencing programs. So over the period we are doing it. So dear learners, kindly use all these e-materials, and if there are any issues, you can write to us. Our email ID is there, and we wish you all the best. Dear learners, today's topic is poultry farming in India.